क्या आप भी एक ऑप्शन बायर हैं और ऑप्शन बाइंग में स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि आपको सही तरीका ही नहीं पता कि सही स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। सही स्टॉक वही होगा जिसका सेक्टर स्ट्रांग होगा, और सेक्टर वही स्ट्रांग होगा जो कि मार्केट के डायरेक्शन में होगा। इसलिए आपको टॉप डाउन एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ को सीखेंगे कि टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करें, और मैं इस पूरे वीडियो में अगली वीक में कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेंगे उसके बारे में डिस्कस करूंगा। स्टेप बाय स्टेप हम इस टॉप डाउन एनालिसिस को करेंगे। सो वेलकम टू अथर ट्रेडिंग। लेट्स डू टॉप डाउन एनालिसिस। तो सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट, निफ्टी। निफ्टी में देखिए, सबसे राइट साइड में मंथली चार्ट है, बीच में वीकली और लेफ्ट में डेली। और नीचे हमने RSI लगा के रखा है 14 डिफॉल्ट पीरियड। इसके अलावा हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो MACD अभी फ़िलहाल के लिए हम हटा देते हैं। तो इसमें देखिए, मंथली में, वीकली में और डेली में तीनों अबव 60 है, मतलब कि निफ्टी स्ट्रांग है। तो हमें ऐसा सेक्टर ढूंढना है जो कि अपसाइड पे स्ट्रांगली परफॉर्म करे। इसमें अभी तक जो काफ़ी दिनों से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, निफ्टी फार्मा, वो अभी भी स्ट्रांग ही है। लेट्स चेक इट वंस। Nifty Pharma is strong monthly, weekly, and daily, all above 60. Apart from that, Nifty FMCG is also strong. Yes, see, Nifty FMCG monthly above 60, weekly above 60, daily above 60. It is also strong. Nifty IT, it was also strong. I have a position in HCL Tech. Nifty IT monthly above 60, weekly above 60, and daily is also above 60. So this is also strong. Apart from that, Nifty consumption. Let's see Nifty consumption. Okay, Nifty consumption is also strong. Monthly above 60, weekly above 60, and daily above 60. Nifty consumer durables. Monthly above 60, weekly is also above 60, and daily is above 60. So Nifty consumer durable is also strong. Let's take Nifty Bank. See, Nifty Bank is struggling in daily chart. It is at 60. So maybe यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, कंटिन्यू भी. So Nifty Bank is not as strong as Nifty Pharma and other sector we have seen till now. Let's check Nifty Auto sector. Okay, in auto sector, see, in daily, monthly and weekly, it is above 60, but in daily chart, it is in congestion period. So we will not select auto sector. Let's see Nifty Financial Services. Nifty FinServ.
Okay, Nifty Financial Services strong as compared to Nifty Bank. Monthly above 60, weekly above 60, and daily is also above 60. And let's check Nifty Metal. Metal sector is not performing as of now. In weekly and daily chart, it is struggling. It is in between 60 and 40 in congestion period. Let's check Nifty Media also. In Nifty Media also, in all chart, it is struggling. So Nifty Media is not a good sector for now. Let's check Nifty Reality. Okay, in Nifty Reality, in weekly and daily, it is struggling. So this sector is also not good for next week. Let's check Nifty Infra. In Nifty Infra, it is struggling in daily chart, so it is also not good. Let's check now Nifty Private Bank. Though Bank Nifty is struggling in daily chart, so it might be possible that Nifty, okay, in Nifty Private Bank, all is strong in daily chart. It just came above 60. So we can consider this. But the problem is that Nifty Bank is struggling. It is still at 60, not above 60. So we will wait. We will choose this. If we will choose this stock, this sector, then we have to wait till Nifty Bank will cross 60. Okay, so finally we are having how much sector? Let's see. Nifty Pharma is strong. Nifty Consumption is strong. Nifty FMCG, Nifty IT, Nifty Consumer Durable, and Nifty Private Bank, of course. So we are having total six number of sectors. Now we will see in our next video, out of these six, whose stocks is performing well and how we can select that. We will see it in our next video. Till then, stay tuned. Please do like and subscribe my channel for more informative video like this.